Students, today we will revise the fifth chapter, that is acids, bases and salt. Okay, to start with, we use the large number of the edible substances in our daily life, such as the lemon, salt, sugar, tamarind and the curd. Okay, so do they have the same taste? No, they don't have the same taste. They are having a different kind of taste. So let's discuss about the edible substances, that is the lemon juice, which is sour in the taste, and the orange juice, which is sour and sweet, curd, that is sour, grapes, sour and sweet, sugar, that is sweet, common salt, that is salty, apple, that is sour and sweet, baking soda, that is bitter, vinegar, that is sour. So there are the different kinds of substances which we are just using in our daily life, and they are having the different taste. So from where these tastes come? Taste कहाँ से आते हैं? Means first of all we are just going to talk about the sour taste. Okay, so sour taste just comes from the acids. Means the edible substances which are having the sour taste, they just contains the acids and not same kind of acid. एक ही तरह का एसिड नहीं होता, देयर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसिड. उनके डिफरेंट काइंड्स के एसिड्स होते हैं जो कि सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होते हैं. बिकॉज ऑफ देम दिस टेस्ट सोर, एंड ऑल द एसिड्स टेस्ट सोर. किसी भी तरह का उसका नाम कुछ भी हो, दे आर जस्ट हैविंग द टेस्ट सोर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट द एसिड्स. सो एसिड्स, the substances which are sour in taste, they are called as the acids. So examples are curd, lemon juice, orange juice and the vinegar. They just taste the sour, so they are having the acids and they are known as the acidic substances. Okay, these substances sour, taste sour because they contains the acids, and the word acid, it just came from the Latin word that is the acer. Okay, which means sour. जो वर्ड है एसिड वो कहाँ से डिराइव हुआ है? दैट इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज़ एसियर, दैट मीन्स सोर. एंड द एसिड, नेम ऑफ द एसिड, इट इज़ बिकॉज ऑफ द वर्ड एसियर. सो देयर आर द मेनली टू टाइप्स ऑफ द एसिड्स, that is the organic acid and or the natural acids, and the mineral acid or man-made or the laboratory acid. So what is the organic acid? The acids which are found in the plants and the animals are called as the organic acid. जो कि ऐसे एसिड्स जो कि प्लांट्स में और एनिमल्स में मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स. सो द एग्जाम्पल्स आर, what are the examples? So examples of the organic acids, that is the citric acid, citrus fruits such as the lemon and orange, lactic acid which is found in the curd, ascorbic acid that is amla and citrus fruits, tartaric acid that is tamarind and the grapes, mangoes, acetic acid it is found in the vinegar, oxalic acid this is found in the spinach, tomato. Exception is spinach. Okay, जिसे हम पालक कहते हैं हिंदी में. It is containing the oxalic acid but it is not sour in taste. ये sour नहीं होता, it is the exceptional. Okay, malic acid, apple, and amino acids they are found in the protein, and there are the some other kinds of the acids which are found in the animals and in the body of the human beings also, like DNA, deoxyribonucleic acid, which is found in the each and every cell of our body, and it controls every feature of our body such as the color of our skin, our looks, color of our eyes, our height, etc. Okay, proteins that build our body, they contain the amino acids. Fats, they contain the fatty acids. Okay, and the ants, they contains the formic acid which is also known as the ant acids. Okay, so these are the acids which are known as the organic acid or the natural acids because they are found in the plants and the animals. Okay, that's why it is known as the natural acids. And what is the meaning of the mineral acid? The acid which is prepared from the minerals of the earth are called as the mineral acids, and they are human made. Okay, so it is also known as the laboratory acid because they are used in the science laboratory for the experiments. And the most common mineral acids are the sulfuric acid, that is H2SO4, and nitric acid HNO3, and the hydrochloric acid, that is HCl. It is mineral acid. But
द HCl कम्स इन बोथ कैटेगरीज। HCl जो है वो ऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में भी आता है और मिनरल एसिड में भी आता है। वाई? बिकॉज आवर स्टमक जस्ट कंटेन्स द HCl। हमारे स्टमक में भी सिक्रीट होता है HCl। ओके, गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट होता है HCl एंड इट इज़ ऑल्सो मैन मेड, और इसे लेबोरेटरीज में भी बनाया जाता है। सो दैट्स वाई इट जस्ट कम्स इन द बोथ कैटेगरीज, ऑर्गेनिक एसिड एंड द मिनरल एसिड्स। सो मिनरल एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस। जो मिनरल एसिड्स होते हैं, जैसे हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, दे आर एडिबल। हम ऑर्गेनिक एसिड्स को क्या करते हैं, ईट कर सकते हैं। वी कैन जस्ट ईट द मिनरल एसिड्स। जैसे सिट्रिक एसिड है, लेमन हम डेली ही ले सकते हैं। लैक्टिक एसिड वी आर जस्ट टेकिंग द कर्ड्स, एस्कॉर्बिक एसिड, आमला एंड द टैमरिन, ग्रेप्स, मैंगो वी जस्ट ईट। ठीक, विनेगर है हमारा, स्पिनच है, टोमेटो, दे आर द वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट्स वी आर यूजिंग। ओके, बट इट इज़ नॉट हार्मफुल टू अस, हमें हार्म नहीं करता है। बट द मिनरल एसिड विच आर प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी, दे आर द क्वाइट डेंजरस फॉर अस। They are highly corrosive. Corrosive in nature means, what is the meaning of corrosive? When they come in the contact of the any surface, they can harm that surface. किसी भी surface के contact में अगर वो आते हैं तो वो क्या करते हैं, उसे harm करते हैं। जैसे कि आपकी skin हो सकती है, paper, cloth, whatever, it can harm it. ठीक, so that's why it is known as the highly corrosive acids, and these acids can cause the severe burns on the skin. These acids should be handled with the great care. Okay, and these acids should never be handled with the bare hands or tasted. ना आप उसे टेस्ट कर सकते हैं, ना आप उसको bare hand से हैंडल कर सकते हैं। You have to wear the gloves. After that you have to touch the acids. Not touch the acids, the bottle of the acids obviously. Okay, so and how many types of the acids? There are the dilute acid and the concentrated acids. So what is the meaning of the dilute and concentrated acids? An acid can be dilute and concentrated depending upon the amount of water. The amount of water decides whether an acid is dilute or the concentrated. So what is the meaning of dilute acid? The acidic solution which has a large quantity of water and a small quantity of acid is called as a dilute acid. And the concentrated acid, the acidic solution which has a small quantity of water and a large quantity of acid is called as the concentrated acid. Okay, and a concentrated acid is an acid in almost pure form or has the very small quantity of water. So now you know dilute acid and the concentrated acid, and the questions comes in the exam. What do you understand by the acid? And give the name of a natural acid, give the name of a mineral acid. Okay, and there is a most important question, name the acid which is present in each and every cell of our body, that is a deoxyribonucleic acid. ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आते हैं कि राइट डाउन द नेम ऑफ 2 एसिड विच इज़ फाउंड इन आवर बॉडी, सो यू कैन राइट डाउन deoxyribonucleic acid, DNA, that is the amino acid, that is the fatty acid, that is the HCl also. ठीक है, तो there are the question which comes from these topics. Okay, so now discuss about the bases. When we were just discussing about the edible substances and we are just looking the chart, there was written the baking soda that was bitter in taste. Okay, वो क्या था, टेस्ट में bitter था. And if we rub a solution of the baking soda between our fingers, it feels soapy or the slippery to touch. जब हम बेकिंग सोडा को अपने फिंगर्स के बीच में रब करते हैं तो वो सोपी फील होता है. ओके, सो द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड हैव द सोपी टच आर नोन एज द बेसिस. जो भी बिटर होंगे टेस्ट में और सोपी होंगे, ओके, ऑन टचिंग, सो दे आर नोन एज द बेसिस. चिली इज़ आल्सो बिटर इन टेस्ट बट इट इज़ नॉट सोपी ऑन टचिंग. चिली जो होता है वो भी बिटर होता है बट इट इज़ नॉट सोपी व्हेन वी आर जस्ट टचिंग. So it is not a base, but baking soda, when you are just tasting it, because it is an edible substance, so you can taste it, you know about that, so you can taste, but you have to not taste all the things. ठीक है, हर चीज़ को हमें टेस्ट नहीं करना है बिकॉज इट कैन बी हार्मफुल. सो बेकिंग सोडा के बारे में हमें पता है कि ये एडिबल है, सो वी कैन टेस्ट. एंड व्हेन वी आर जस्ट टेस्टिंग द बेकिंग सोडा, इट इज़ bitter in taste, and when we are just rubbing the solution of the baking soda between our fingers, it feels soapy, so it is the base. So that what is the definition of the basis? The substances which are bitter in taste and have soapy touch are known as the basis.
and the nature of the substance said to be basic. Some common bases are sodium hydroxide NaOH, potassium hydroxide KOH, calcium hydroxide CaOH whole twice, and the magnesium hydroxide MgOH whole twice. Okay, and the names of the some common bases are given in this table. That is the calcium hydroxide, which is commonly known as the lime water, okay, CaOH whole twice, ammonium hydroxide, okay, NH4OH whole twice, window cleaner, that is the floor cleaner, wood polish, sodium hydroxide NaOH, potassium hydroxide KOH, which is used in making the soap, magnesium hydroxide MgOH whole twice, that is antacid, ओके, एंड कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, टूथपेस्ट में, ऑइंटमेंट्स में यूज़ होता है. सो देयर आर द सम बेसिस. एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बेसिस? दे आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग. ओके, सो दे आर नोन एज द बेस. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द न्यूट्रल सब्सटेंसेस? ओके, न्यूट्रल सब्सटेंसेस, कुछ एसिडिक हो गए, कुछ बेसिक हो गए. ओके, न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या हैं? The substances which are neither acidic nor basic in the nature are called as the neutral substances. जो कि ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, वो क्या कहलाएंगे हमारे? दे आर नोन एज न्यूट्रल सब्सटेंसेज. लाइक प्योर वाटर, इसमें ना तो ये सोर है और ना तो ये बिटर है और ना तो ये फील होता है सोपी. सो इट इज़ डिस्टिल वाटर, यू कैन से प्योर वाटर. दैट इज़ ग्लूकोज है, शुगर जिसे हम कहते हैं, यूरिया है, शुगर है, सॉल्ट है, केन शुगर है. देयर आर सम अदर एग्जाम्पल्स विच आर नॉट हैविंग द सोर टेस्ट और द बिटर टेस्ट विच फील्स ऑन सोपी ऑन टचिंग. दे आर नोन एज द न्यूट्रल सब्सटेंसेस. ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं हमारे? न्यूट्रल सब्सटेंस. जो ना तो एसिडिक सब्सटेंस है ना तो बेसिक है, वो क्या कहलाएंगे? दे आर नोन एज द न्यूट्रल सब्सटेंसेस. ओके, सो वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द एसिड्स एंड बेसिस. हम डिस्कस कर रहे हैं एसिड्स और बेसिस के बारे में. ओके, सो acids and bases, we are just talking about the edible substances in the case of the acids, and we are just going through the mineral acids. मिनरल एसिड्स वो थे जो कि हमारे लेबोरेटरी में बने हुए थे, जिन्हें हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं. एंड वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिस. सम एसिड्स एंड बेसिस आर द हार्मफुल. ठीक है, जो मिनरल एसिड्स हैं वो भी हमारे कोरोसिव हैं, और हमारे कुछ जो ये बेसिस हैं वो भी हमारे कोरोसिव हैं नेचर में. कुछ ही एसिड्स ऐसे हैं, एसिडिक सब्सटेंसेस ऐसे विच आर एडिबल, जिन्हें हम खा सकते हैं. ठीक है, सो the definition is that the acidic acids which are having the sour in taste and bases which are bitter in taste. So we are just talking about the taste. क्या हम हर चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं? We can't, हम नहीं कर सकते. हम हर एक चीज़ को टेस्ट करके ये नहीं बता सकते कि पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है ये सोर है तो ये एसिड है, या पर्टिकुलर सब्सटेंस ये बिटर है और हमने इसे टच किया है और ये सोपी फील हो रहा है तो इट इज़ अ बेस. सो बिकॉज इट कैन बी हार्मफुल फॉर अस. हम किसी भी चीज़ को ऐसे टेस्ट करेंगे तो क्या वो कोरोसिव होगा, हमें हार्म नहीं करेगा? ऑब्वियसली हार्म करेगा. क्या हम H2SO4 को टेस्ट कर सकते हैं? नेवर, कभी नहीं कर सकते और कभी करना भी नहीं चाहिए. इट इज़ वेरी वेरी कोरोसिव इन नेचर. सो देयर आर द सम सब्सटेंसेस. okay, there are the some substances which are used to detect the particular substance is acid or base, that are known as the indicator. वो क्या कहलाते हैं? Indicator. Okay, there are the particular substances, special substances which you can say which have a different color in the acidic or the basic mediums, and which can which just tells us the particular substance is acid or base. Okay, so they are known as it is just known as indicator. Okay, so there we are just going to talk about the indicators. अब हम इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम हर चीज़ को टेस्ट करके ये नहीं बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर थिंग क्या है, एसिडिक है या बेसिक है. तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनसे हम ये बता करके बता सकते हैं विदाउट टेस्टिंग कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है या बेस है, और विदाउट टेस्ट करके उन इंडिकेटर्स की हेल्प से हम ये बताते हैं कि ये सब्सटेंस कैसा है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द इंडिकेटर्स. When we are talking about the indicators which are used to detect the particular substance is acid or base. Okay, so we are just going to discuss about the indicator, and indicators are of two types, that is a natural indicator and the synthetic indicator, which is also known as the man-made indicator.
So natural indicator which are present in the nature, they are known as the natural indicator. And in the natural indicator, okay, when we are just reading about the natural indicator, the first example is the litmus. And litmus is derived from the lichens. You know about the lichens? Okay, it is most commonly used indicator. Litmus is the most commonly used indicator, and it is dye extracted from the lichens. The solution of the litmus in the distilled water is mauve, that is the purple color, and this solution is called as the neutral litmus solution. Okay, and it is in the form of the solution. The litmus is used in the form of solution and also in the form of the strips. Okay, so litmus is used in two forms. It can used in the form of solutions and it can used in the form of strips. So there are the two types of litmus papers, that is the red litmus paper and the blue litmus paper. Okay, so when we are just having the solution, first of all let's discuss about the solution. The solution gives the mauve color in the distilled water, and when it is added to the acidic solution it just gives the red color, and when it is added to the basic solution it gives the blue color. And there are the strips available in the form, it is most commonly used indicator. सबसे ज़्यादा यूज़ यही होता है बिकॉज इट जस्ट कम्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप. तो स्ट्रिप कौन सी है? एक बेसिक है जिसे रेड लिटमस पेपर कहते हैं. ठीक है, बेसिस को टेस्ट करने के लिए होती है. और क्या होती है? That is the blue litmus paper, red litmus and blue litmus paper. So first of all, blue litmus paper just turns the acids in the red, and the red litmus just turns the bases in the blue color. Okay, so it is the most commonly used indicator, that is the litmus paper or the litmus solution, and the litmus paper is commonly used. It is also commonly used in the laboratories for the identifying the particular substances, acid or base. Okay, when you are just taking the blue litmus paper, it turns red in the acidic solution and does not change the color in the basic solution and the neutral solution. It remains blue. ठीक है, ये ब्लू ही रहेगा. एंड द बेसिस टर्न द रेड लिटमस टू ब्लू. लेकिन अगर ये आपने रेड लिटमस को एसिडिक सोल्यूशन में डिप किया तो इट डज नॉट चेंजेस द कलर. ये अपना कलर चेंज नहीं करता. ठीक है, एंड इन द न्यूट्रल सोल्यूशन इट डज नॉट चेंज द कलर. सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द स्ट्रिप्स आर अवेलेबल, दैट आर द लिटमस पेपर. Okay, the second natural indicator is turmeric, which is known as the haldi, which is used in your home for cooking the foods. कुकिंग जो करते हैं फूड की तो उसमें टर्मरिक को बहुत यूज़ किया जाता है. एंड दैट इज़ द नेचुरल इंडिकेटर बिकॉज इट इज़ फाउंड इन द प्लांट्स. ये प्लांट्स में पाया जाता है, तो ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं. ठीक है, सो टर्मरिक इज़ ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर एंड इट जस्ट टर्न्स व्हेन इट इज़ turmeric when it is added in the acidic solution. When it is added in the acidic solution it just remains yellow, कोई कलर चेंज नहीं होगा. ओके, एंड न्यूट्रल सोल्यूशन. ठीक है, अगर न्यूट्रल सोल्यूशन में न्यूट्रल सोल्यूशन है या हमारा एसिडिक सोल्यूशन है और उसमें अगर हमने एसिड्स को ऐड किया है, टर्मरिक को ऐड किया, तो वो जो सोल्यूशन है इट जस्ट रिमेन्स येलो. Okay, and when we add the turmeric in the basic solution, okay, in the basic solution it just turns red. कौन से कलर में आता है ये रेड कलर देता है. मीन्स द turmeric gives the red color in the basic solution and remains yellow in the neutral and acidic solution, and it is also a natural indicator. Next the next natural indicator is the China rose indicator, which is also known as the hibiscus. Okay, जिसे आप गुड़हल कहते हैं हिंदी में, that is the China rose or you can say hibiscus. So we just use it as the natural indicator. So first of all we have to make the solution of the China rose. तो solution इसका कैसे बनाना? We have to take the warm water and add some petals of the China rose and leave it for some time. That can be 15 minutes, and after that take out the petals, okay, petals from the water and just filter the solution. Now you are just having the China rose solution. And how to identify the particular
substance is the acidic or the particular substance is basic. Okay, so when we add the China rose indicator, which is having the light pink color, we had just made the China rose indicator by adding some petals in the warm water, and after filtering it, we are just having a solution which is having the light pink color. Okay, so this is an indicator. When we add this solution to the acids, so it just turns, when it is acidic, if it is acidic, it just turn to magenta color, or you can say pink color. And when we add the China rose solution to the basic solutions, it just turns green color. Means China rose indicator gives the dark pink color, or you can say magenta color in the acidic solution, and gives the green color in the basic solution, and remains light pink in the neutral solutions. Okay, so there are the three kinds of the natural indicators I have told you, or you can say we have discussed about it. That are the litmus solution or the litmus paper, and second one was turmeric, and third one that is the China rose petals. ठीक है, जिसे हम गुड़हल कहते हैं, और hibiscus. So they are the natural indicators because they are present in the nature. So that's why we are just known as the indicator. And I have told you about the indicator. What are the meaning of indicator? Indicator are the substances which just tells us the particular substance is acidic or basic by changing their color in the particular substances. यानी वो अपना कलर चेंज करके हमको ये बताते हैं कि ये पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. जैसे हमने लिटमस के बारे में बात की, एंड लिटमस पेपर इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड. ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला जो इंडिकेटर है वो क्या है? लिटमस पेपर है. इट इज़ अवेलेबल इन द टू कलर्स, दैट इज़ द ब्लू लिटमस पेपर एंड द रेड लिटमस पेपर. ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड इन द एसिडिक solution, and red litmus paper turns blue in the basic solutions. Okay, and when we are just talking about the blue litmus paper, it turns red in the acidic solution but remains blue in the basic and neutral solution. And in the same way, when we talk about the red litmus paper, it turns blue in the basic solution but remains red in the acidic and neutral solutions. Now next one was turmeric. Turmeric के बारे में भी हमने बात की. Turmeric solution just gives the red color in the basic solution and remains yellow in the basic and remains yellow in the acidic and neutral solutions. And third one, that was hibiscus. And when we are just forming or you can say making the China rose solution, it just turns the acidic solution. It just turns the acidic solutions in the dark pink color, and when it is added in the basic solution, it just gives the green color. So these are the natural indicators. Okay.